Good morning, students. So, welcome again, and we learn about the inside our Earth. Okay, chapter number 2 in geography. And last video we learn about the crust, mantle core, Shial, Shima, and Nipe. And little bit we discuss about the rocks and minerals. Now, in this video, we learn about how they call igneous rocks and sedimentary, and what is the word origin. Okay, so the mainly the word related to Latin word. Okay, igneous Latin word related to ignis, that it means fire. Sedimentary Latin word sedimentum, that is that means settle down, and metamorphic rocks word that metamorphose. Okay, so both igneous and sedimentary, that is related to Latin word, and metamorphic related to the Greek word. Okay, meaning change of form. So we know about that. Igneous rocks related to fire. Okay, when the molten magma cool down and settle down, then they can change into the rock. That such type of the rocks are called igneous rock. Okay, second one is sedimentary. So when the sediment is deposited one by one and a layer and compressed, and that type of the rocks, that is called made up by the nature, that is called sedimentary rocks. Okay, just like the example given, limestone change into the marble. Okay, and slate into the marble. Okay, now metamorphic Greek words that also the change into the form. Okay, last one is the metamorphic rocks, which rocks are changed their form into last one, that is called metamorphic rocks. Okay, now fossil fuels. Fossils, the remains of the dead plants and the animals trapped in the layer of rocks, are called fossil. Okay, such type of clip I will send you. Okay, which type of the plants and some animals also trapped between the two stone. Yeah, you can say the deposited layer, that is called the fossil fuel fossils. Okay, and such type of the fuels related to the fossil, that is called fossil fuels, we learn about in the next section. Okay, now today we little bit yeah mention it, and today we learn rocks roll down, crack, and all the heat each other and are broken down into the small fragments. These smaller particles are called sediments. So small particles related to the sediments. Okay, these sediments are transported and deposited by wind, water, etc. These losses sediments are compressed and hardened to the from a layer of rocks. These type of the rocks are called sedimentary rocks. For example, sandstone in the made from the grains of sand. Okay, these rocks may also contain fossil of the plants, animal, and other microorganisms that once lived on them. जब कभी उसमें कुछ रहे होंगे वो, ठीक है. Now igneous rocks and sedimentary rocks can change into the metamorphic rocks. Both rocks change into the metamorphic rocks. Okay, under great heat and pressure. Why under great and pressure? For example, clay change into slate, clay change into the slate, and limestone into marble. Then rocks are very useful to us. Okay, and the hard rocks are used for making roads, houses, and buildings. सो यू सी योर नेबरहुड, या यू कैन, आपने जब अपने आस पड़ोस में देखा होगा कि पत्थर से बनी हुई जो चीज़ें हैं, पुराने समय में पत्थर के ही मकान बनते थे, पत्थर की ही स्लेट से ऊपर छत बनाई जाती थी, और बिल्डिंग्स के लिए, रोड्स के लिए, या ठीक है, आपने देखा होगा कि जब रोड पर क्या किया जाता है, डामर किया जाता है, तो उस समय भी उसमें क्या यूज होता है, छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं वो रॉक से ही बने हुए होते हैं, ठीक है. डामरीकरण होने के समय में भी. यस, यू यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स. आप बहुत से गेम्स में स्टोन का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, 7 स्टोन्स, दैट इज कॉल्ड पिट्ठू. ठीक है, जो पिड्डू कहते हैं हम, पिट्ठू खेलने में यूज होता है. हॉप स्कॉच, स्टपू, किट किट, या फिर जो एक तरह का गेम होता है. 5 स्टोन्स, गिट्टी जो होती है, खासकर गर्ल्स इसको खेलती थी. फाइंड आउट सब मोर सच गेम्स, कुछ और जो पत्थर से खेले जाते थे, बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड नेबरहुड नेबर्स, यानी कि पुराने समय में और कौन कौन से गेम जो पत्थरों से खेले जाते रहे होंगे. ठीक है, नाउ कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ सम मॉन्यूमेंट्स एंड फाइंड आउट विच आर द रॉक्स यूज टू बिल्ड दैम. 2 पिक्चर्स हैव बीन कलेक्टेड फॉर यू. ओके, 2 पिक्चर्स यहाँ पर दी हुई हैं. एक रेड फोर्ट जो रेड स्टोन या रेड सैंड स्टोन से बना हुआ है, ठीक है. सेकेंड वन इज द वाइट मार्बल से बना हुआ ताजमहल. यू ऑल नो अबाउट दैट. ओके, and just like in class 7th you learn about that one. आप 7th में हिस्ट्री में पढ़ेंगे
ग्रेफाइट से बना हुआ बृहदेश्वर टेम्पल इन द तंजौर, ओके, उसके बारे में हम फिर पढ़ेंगे, जब भी उसका जिक्र आएगा तो मैं रॉक से रिलेटेड चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है। यू विल बी सपोर्टेड नाउ दैट वन टाइप ऑफ द रॉक्स चेंज टू अनदर टाइप अंडर द सर्टेन कंडीशन। एक जो रॉक होती है वो दूसरी रॉक में चेंज हो जाती है सर्टेन कंडीशन में, कुछ विशेष परिस्थितियों में, दैट इज कॉल्ड रॉक साइकिल। द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल। और एक से दूसरे में वही चेंज होने की जो साइकिल है उसे हम रॉक साइकिल कहते हैं, जो आप नीचे फिगर 2.4 में आप देख रहे हैं, ओके। नाउ यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट सॉलिडिफाई टू बिकम द इग्नियस रॉक्स। तो हमने पढ़ चुके हैं कि जब मोल्टन मैग्मा, जो पिघला हुआ मैग्मा लावा होता है, वो ठंडा होता है तो किस में चेंज हो जाता है, ठंडा होने के बाद वो चेंज हो जाता है इग्नियस रॉक्स में, ठीक है। दीज इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन, जब वो टूटती फूटती हैं एकदम नहीं, कई समय के बाद वो टूटती फूटती हैं तो फिर वो किस में चेंज हो जाती है, सेडिमेंट में चेंज हो जाती है। वही सेडिमेंट फिर जमा होकर के क्या बनता है, उसी से बनती है सेडिमेंट्री रॉक्स, ओके। नाउ सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर। और जब वही सेडिमेंट्री रॉक्स भी इग्नियस रॉक्स में भी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो उसके बाद वो चेंज होती हैं किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट, जब वह ज़्यादा क्या होती हैं, ग्रेट एंड हीट, जब उसके अंदर और ज़्यादा हीट मिलती है उसको, प्रेशराइज जब वो होती है फिर वो चेंज हो जाती है मोल्टन मैग्मा में, ठीक है। तो यह एक प्रोसेस है जो चलता रहता है, मैग्मा, मैग्मा के बाद इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री सेडिमेंट्री के बाद फिर मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक फिर से चेंज हो जाती है किसमें, मोल्टन मैग्मा, मोल्टन मैग्मा फिर कूल्स डाउन होगा, फिर आएगा इग्नियस रॉक्स, ओके। So that is called this molten magma again can cool down and solidify into the igneous rock. तो ये चेंज हो जाती है again in rocks, okay. Now what are the minerals found in your state? So we know about that. In Uttarakhand, copper and limestone, such type of the minerals found here, okay. Now you can collect some example also, या some samples also in your नेबरहुड या इन योर अपने आस पड़ोस में जो भी आपको मिलता है, ठीक है, जो उससे रिलेटेड है। नाउ रॉक्स आर मेड अप ऑफ द डिफरेंट मिनरल्स, अलग अलग मिनरल्स से बनी होती है। मिनरल्स आर नेचुरली अक्योरिंग सब्सटेंस विच हैव द सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड द डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, ठीक है, कि हर रॉक्स में, हर एक मिनरल्स में, सॉरी नॉट रॉक्स, मिनरल्स में नेचुरल फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और उसका एक फिक्स नेचुरल केमिकल कंपोजिशन भी होता है, ठीक है। So now minerals are very important to human kind. Some are used as fuels, कुछ फ्यूल के रूप में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल है, नेचुरल गैस है एंड पेट्रोलियम है, ठीक। दे आर ऑल्सो यूज इन द इंडस्ट्रीज, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्राज, ये भी सब उसी के फॉर्म है, ठीक है। आयरन वी बेटर नोज, एल्यूमिनियम भी हमें पता है, ठीक है, गोल्ड यू बेटर नो, एंड यूरेनियम ऑल्सो, यूरेनियम इज लिटिल बिट टफ फॉर यू। इन द मेडिसिन ऑल्सो, इन मेडिसिन के रूप में भी होता है, जैसे मैंने रॉक सॉल्ट कहा, ठीक है, काला नमक कहा। इन फर्टिलाइजर्स ऑल्सो, और फर्टिलाइजर्स के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था। आई होप यू अंडरस्टैंड इन बेटर वे, ओके। और आंसर और क्वेश्चन और आंसर मैं भेज रहा हूँ और उसको आप अपने नोटबुक में करेंगे, और जो भी आपका दिन डिसाइड किया गया उस दिन आप अपने टीचर को अपना करेक्शन वर्क भेजेंगे, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। थैंक यू वेरी मच।